गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सोलिना चैनल एंड यूक्रेन ग्रेन डील। तो ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया ने ओवरनाइट ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और उन पोर्ट्स और ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज़ को टारगेट किया है जिसके थ्रू यूक्रेन ग्रेन्स जो है वो डेन्यूब रिवर के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा था। तो डेन्यूब डेल्टा जो है वो यूक्रेन को एक ऑल्टरनेटिव पैसेज दे रहा है अपने ग्रेन को जो है वो बेचने के लिए। एक न्यू ट्रेड राउट यूक्रेन ने आइडेंटिफाई किया था सोलिना चैनल से, जिससे कि मेजर यूक्रेनियन पोर्ट्स जो हैं वो ब्लैक सी के थ्रू रिवर डैन्यूब रिवर के थ्रू जो है वो रोमेनिया के बॉर्डर तक पहुंचाए जा रहे थे। अब ये न्यू पाथ के बारे में अगर हम देखें तो यूक्रेन अपने पोर्ट्स इज़माइल और रेनी के थ्रू जो है सुलीना पोर्ट तक पहुंचता था, जो कि यूक्रेन में ही है ऑफ कोर्स, और सुलीना चैनल के थ्रू जो है रोमेनिया के बिगेस्ट सी पोर्ट कॉन्स्टेंटा जो है उसमें रिवर के थ्रू जो है ये ग्रेन्स को पहुंचाया जा रहा था। तो अगर हम देखें डैन्यूब रिवर के बारे में तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की आफ्टर वोल्गा। वोल्गा रिवर ऑफ कोर्स रशिया की है। रशिया और यूरोप को जो है डिवाइड करती है। मतलब वोल्गा के जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है वो यूरोपियन रशिया है, और जो वोल्गा के राइट साइड का पार्ट है वो जो है आपका एशियन रशिया है। ठीक है। तो एनीवेज अब हम देखते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट रीजन जो है जर्मनी का, वहाँ से ये डेन्यूब रिवर ओरिजिनेट होती है और ये एम्प्टी होती है जाके ब्लैक सी में। लगभग 2850 किलोमीटर लंबी ये डेन्यूब रिवर है और कई कंट्रीज़ के थ्रू पास करती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमेनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, इन सारी कंट्रीज़ के थ्रू जो है डैन्यूब रिवर निकलती है। तो आपको इसका राउट जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम सुलीना चैनल के बारे में देखें तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमेनिया में सिचुएटेड है नियर द टाउन ऑफ सुलीना, और ये डैन्यूब रिवर को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट कर रहा है। सुलीना जो है वो माउथ ऑफ डैन्यूब के पास पड़ता है, जो कि ऑफ कोर्स सुलीना भी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है डैन्यूब रिवर की। ठीक है। ये एक नेविगेशनल राउट बनता जा रहा है डैन्यूब रिवर का, जिसके थ्रू जो है ब्लैक सी के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उद्गम पोर्टल। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने रिसेंटली एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम जो है वो लॉन्च किया है, ताकि लोग अपना अनक्लेम डिपॉजिट जो है कई मल्टीपल बैंक्स में वो एक ही जगह से जो है क्लेम कर सकें। तो मैं हमारे पब्लिक के मेंबर्स हैं जो है वो अपने अनक्लेम डिपॉजिट्स को बहुत सारे बैंक्स में जो उनके पड़े रह गए हैं पिछले 10 साल के, उनको क्लेम कर सकते हैं। अपने आप को उनको उद्गम पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा अपने मोबाइल नंबर के साथ, और अपने पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नंबर का जो है वो प्रूफ देकर वो अपने अनक्लेम डिपॉजिट जो है उनके नाम पर वो क्लेम कर सकते हैं। इन केस अगर उनके जो डिपॉजिट होल्डर है वो पास अवे हो चुका है तो जो नॉमिनी है वो वही सेम डॉक्यूमेंट्स दिखाकर वो जो है क्लेम्स ले सकते हैं। ठीक है। अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जनरली जो 10 साल पुराने डिपॉजिट्स हैं जो इनएक्टिव रहे हैं अकाउंट, उनमें डिपॉजिट्स रह गए हैं, उनको क्लेम करने को उनको हम अनक्लेम डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गांधीनगर डेक्लेरेशन। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डब्ल्यूएचओ के साउथ ईस्ट एशियन रीजन ने रिसेंटली कमिट किया है कि वो अपने एफर्ट्स और बढ़ाएंगे ताकि ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक ख़त्म किया जा सके। ये है गांधीनगर डेक्लेरेशन। गांधीनगर डेक्लेरेशन 2 दिनों की मीटिंग के बाद जो है वो अडॉप्ट की गई है, जिसमें कि कहा गया है कि हाई लेवल मल्टी सेक्टोरल कमीशन बनाया जाए, जिसमें कि हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल हर कंट्री का इन्वॉल्व हो, और वो हेल्थ सिस्टम्स और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को, हेल्थ सिक्योरिटी को जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काम करें। ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ह्यूमन राइट बेस्ड एक अप्रोच टीबी सर्विसेज के जो है कंटेक्स्ट में हम लेकर आएँ, ताकि सबको ये अवेलेबल हो सके, एक्सेसिबल टू ऑल रहे। ठीक है। हमारा मोटिव ये है कि 2030 तक हमको ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना है दुनिया से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमाइलोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो पेशेंट्स के सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो कि अमाइलोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं, उन्होंने कहा है कि इस कंडीशन को एक रेयर डिसीज़ डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ है। मतलब इसमें जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइन से कनेक्टेड होते हैं, जो कि हमारे वॉलंटरी फंक्शन जैसे आपको वॉक करना होता है, च्यू करना होता है, टॉक करना होता है, अपने हाथ को हिलाना, उन सबको अफेक्ट कर देता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो नर्व सेल्स हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, और जो मसल्स उन पे जो इन नर्व सेल्स पे डिपेंडेंट होती हैं वो फिर सही से काम नहीं कर पाती हैं। अब ये कैसे अफेक्ट करता है बॉडी को? जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, खासकर अपर मोटर न्यूरॉन्स जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजते हैं कि अब आपको ये मसल को मूव करना है, जब ये दोनों ही जब वर्क करना ख़त्म कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में जो है मसल की मूवमेंट नहीं होती है। तो एक तरह से ये मस्कुलर डिसीज़ है।
ठीक है। इसका जो इसकी रीज़न है वो ऑफ कोर्स हो सकता है कि नर्व सेल्स की वजह से नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेटली जो आपकी मसल्स जो बॉडी की मूव होनी बंद हो जाती हैं। ठीक है, इसका कोई क्योर भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सॉर्टेड। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, उन्होंने जो है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर जो है वो तैयार कर दिया है, जो कि एक प्राइवेट लॉन्च पैड है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो अग्निबाण जो है वो एक सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जो कि अग्निकुल के पेटेंटेड अग्निलेट इंजन जिन्होंने बनाया है। इंटायरली 3D प्रिंटेड इंजन है ये। सिंगल पीस 6 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ये बेसिकली। अग्निबाण एक जो है वो वर्टिकली लॉन्च होगा, लिफ्ट ऑफ होगा, और ये एक प्री डिटर्मिन ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। ठीक है, इसको 1 या 2 स्टेजेस में लॉन्च किया जाएगा। 18 मीटर टॉल है, 14,000 kg का है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और कैरोसिन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब ये रॉकेट जो है वो 10 डिफरेंट लॉन्च पोर्ट से जो है वो डिफरेंट लॉन्च पोर्ट से जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड का अकेला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लड वॉच ऐप। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, फ्लड वॉच। ये फ्लड वॉच ऐप बेसिकली इन्फॉर्मेशन देती है फ्लड सिचुएशन के बारे में कंट्री में, और 7 दिन अप टू 7 डेज तक की जो है ये फ्यूचर की रियल टाइम बेसिस पर ये पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। और ये रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग में भी हेल्प करेगी, और लोग जो है अप टू डेट फ्लड सिचुएशन थ्रू आउट द कंट्री को मॉनिटर कर पाएंगे। नियर रियल टाइम रिवर फ्लो डेटा ये वेरियस सोर्सेज से जो है उपलब्ध कराएगी। स्टेट वाइज बेसिन वाइज फ्लड फोरकास्ट भी देगी अप टू 24 आवर्स का, और एडवाइजरी देगी ऑफ कोर्स अप टू 7 डेज तक की। सैटेलाइट डेटा एनालिटिक्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है ये टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके एक्यूरेट और टाइमली फ्लड फॉरकास्ट दे सकेगी। अब अगर हम सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में देखें तो अटैच्ड ऑफिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, और ये कंट्रोल, कंजर्वेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के लिए थ्रू आउट द कंट्री काम करता है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Sulina Channel and Ukraine grain deal. So this topic is important for your international relations. So Russia has recently made an overnight drone strike, and it has deliberately targeted ports and grain storage facilities, using which Ukraine was selling its grain through the Danube River. So Danube Delta has provided Ukraine with an alternative passage for its grain, especially after Russia has withdrawn from the Black Sea grain deal last month. So this new trade deal is using the Sulina Channel, which is of course in Romania, and it is connecting major Ukrainian ports on the river to the Black Sea. If we look at this new path, then Ukrainian ports like Izmail and Reni, both on the mainstream of Chelia channel, they using this channel, grains are headed to the port of Sulina at the mouth of Sulina channel, and they head around 140 kilometers south to Constanta, that is the biggest seaport of Romania, and through that of course the grain gets transferred. So if we look at the Danube River, then it is the second longest river in Europe after the Volga River, and it originates in the Black Forest region of Germany. So it also flows eastwards and passes through several countries before emptying into the Black Sea. So which countries does it pass through? Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine. Okay, so this Danube River is approximately 2850 kilometers long, and it is the second longest river in Europe after Volga. Okay, Volga River is in Russia. So if we look at Sulina channel, then it is situated in the eastern part of Romania near the town of Sulina, and it connects the Danube River to the Black Sea. So Sulina is situated at the mouth of Danube, and it is a distributary of the Danube River. Okay, so this Sulina channel is the primary navigational route for several ships which enter and leave the Danube River from the Black Sea. Okay, so the next topic is Udgam portal. This topic is important for your governance and economy topics both. So Reserve Bank of India has recently launched this centralized web portal called Udgam,
that is unclaimed deposits gateway to access information for the public so that they can search for their unclaimed deposits across multiple banks at once. So they have to first register themselves on this portal using their mobile number, then they can search for the unclaimed deposits using their own name, and they have to provide additional inputs like their PAN number, voter ID, driving license, etc. And then they would be able to retrieve these deposits by completing a KYC process. So in case the deposit holder has passed away, then the nominee will have to follow the entire procedure, okay, on the behalf of the original deposit holder. So what are these unclaimed deposits which we are talking about? So basically these are the funds which are held in savings or current accounts, and they have remained inactive for duration of about 10 years. So in case of FDs, they have not been withdrawn from 10 years within 10 years from the date of maturity. So the next topic is Gandhinagar Declaration. This topic is important for your governance section. So WHO Southeast Asia region has recently committed to further accelerate efforts so that tuberculosis can be ended by 2030, and they have therefore adopted the Gandhinagar Declaration, and there was 2-day meeting at Gandhinagar to follow up on the progress made to end tuberculosis by the countries of the WHO Southeast Asia region. So they have called for establishing a high-level multi-sectoral commission which will report to the highest political level in each country so that synergized efforts can be made among various stakeholders so as to monitor the progress towards ending TB and other priority diseases. So the idea is to help build responsive health system and advance universal health coverage and health security. So to achieve this success, use of science and technology for equitable and human rights based TB services approach would be followed so that healthcare can be made accessible to all. Okay, so allocation of necessary resources were also emphasized so as to meet TB service coverage targets and address social determinants to have a multi-disease impact. Okay, so the next topic is amyotrophic lateral sclerosis. This topic is important for your social issues. So support groups for patients with amyotrophic lateral sclerosis, they have urged that this condition should be treated as a rare disease because this is a neurodegenerative disease, and under this disease special nerve cells which are also called motor neurons, which are of course connected with the brain and spine, and they control our voluntary functions like walking, chewing, talking, moving our arms, and because of this neurodegenerative disease all of this gets affected. It is also known as Lou Gehrig's disease. So under this disease nerve cells or the motor neurons progressively die, and that's why the muscles which are dependent on them, they are unable to function or move. So how does this affect the body? So generally you know that motor neurons, they once they start declining, they cannot send signals to these muscles. So what happens is that the brain or the spine, they send messages through the upper motor neurons, which further send these signals to lower motor neurons, and these lower motor neurons basically send messages to our muscles telling them to move. Okay, so it takes about 8 to 15 months for diagnosing this disease from the onset of symptoms, and currently there is no effective cure for this disease. So the next topic is sorted. This topic is important for your science and tech section. So Chennai based startup Agnikul Cosmos has recently commenced the process of integrating its cutting edge Agni-Band suborbital technological demonstrator, which will be at its private launch pad at the Sri Harikota Satish Dhawan Space Center. So Agni-Ban is basically a single stage launch vehicle powered by Agnikul's patented Agnilet engine, which is an entirely 3D printed single piece 6 kilonewton semi cryogenic engine. Okay, so this will lift off vertically and it will follow a predetermined trajectory to perform a precisely orchestrated set of maneuvers. So it will be launched in 1 or 2 stages, and the first stage could have at least the 7 Agnilet engines depending on the mission, and they are being powered by liquid oxygen and kerosene. So the rocket is designed for launch from more than 10 different launch ports, and this Agnilet engine is the world's sole single piece 3D printed engine. So the next topic is FloodWatch app. This topic is important for your governance section. So recently, Chairman of Central Water Commission has launched this mobile application called FloodWatch, and this app gives information related to the flood situation and forecasts up to 7 days on a real-time basis to the public. So
includes other features of the app include real-time flood monitoring, where users can check up-to-date flood situation throughout the country, and this app uses near real-time river flow data from various sources. It also will provide state-wise or basin-wise flood forecast up to 24 hours, or even flood advisory up to 7 days, which can be accessed by selected specific stations, state-wise or basin-wise from the menu. So this app basically would be utilizing advanced technologies like satellite data analysis, mathematical modeling, and real-time monitoring to deliver accurate and timely flood forecasts. If we look at the Central Water Commission, then it's a premier technical organization of India in the field of water resources, and it functions as an attached office of Ministry of Jal Shakti. Okay, so what are the functions of Central Water Commission? So apart from the general responsibility to undertake investigations, construction, and execution of schemes by the Ministry of Jal Shakti, it is also entrusted with the responsibility of controlling, conserving, and utilizing water resources throughout the country. So it is headed by a chairperson who is basically the having the status of ex officio secretary to the Government of India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.